Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Keep the charts clean. We'll start in 2 minutes. No worries. Totally fine. Good morning, Patel. Good morning, Mr. Agastya. Good morning. Okay, let's start. So, what are the major things that you guys have to look for? कल की वीडियो में कुछ डाउट्स है तो पूछ लेना. पहले पूछ लो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं. साइडवेज जोन में कुछ प्रॉब्लम्स है. गुड मॉर्निंग उस्मा. ओके, कोई डाउट्स नहीं है ना. ग्रेट. सो एट दिस पॉइंट ऑफ एक्शन मेरे को मेजर चीज ऑफ एक्शन क्या देखना है? स्विंग का टारगेट्स देख लेना. सो दिस इज माय TP2 which is 3477. My TP3 is at 3621. Okay, so these are the next swing targets which we'll be looking for. First swing target हमारा hit हो चुकी है. उसके साथ continuity में this will be the next swings that will be holding the trade still. This is for swing traders. Now let's start with the analysis for ID as well as swing का next add-on point. At the current state of actions, market में क्या देख रहे हो आप? मूवमेंट अलोकेशन के साथ ब्रेक थ्रू के साथ कंटिन्यूटी. हाउ डू वी लुक इनटू द सर्कमस्टांसेस? लेट्स cut this entire thing and let's start with March. So this is my major demand, right? With the major demand allocation, just one thing you have to know is where exactly is your supply allocation. Buyer's point of allocation यहाँ पे दिखने को मिली थी. Yes, definitely. With that point of interest, what do we see? We see a rejection. Rejection कहाँ से लेगा market? जो previous supply है उस supply से demand convert होते हुए दिखेगी. Because from the bearish movement, market tend to move towards the long. Post that, the previous supply will act as your current with the current supply allocation. Multiply it with the multiplying the next. Okay, so 150% rejection से market ने reverse ली. At this point of action, what will be my length of this current movement? ये लेंथ होगा मेरा प्रीवियस जो डिमांड है ना, उतना ही लेंथ ऑफ मूवमेंट में एक्ट होगी. At this scenario, this is my entire movement plan of demand that will act as my current. With the current movement, what is the next step? Whatever the entire supply is there in the action plan, post your previous demand to the current demand के बीच में जितना भी supply है, that will act as your next surplus. Surplus कब generate होता है market में? जब भी हमारा 150% के ऊपर continuity में जाता है, that is called as surplus movement. In the surplus movement plan of actions, हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी movement allocate होती है, आपको rebound effect दिखने को मिलती है. In this scenario, this was your rebound effect at 200%, right? So with the 200% rejection, market में first plan of action क्या होना चाहिए? मेरा previous. So this is my first demand allocation. Demand allocate किया, market ने एक ही candle में break and continue. With the break and continue, I'll multiply it. Market took a 200% rejection. उसके बाद भी movement was in the continuity, correct? So always remember one thing, if the market breaks your first demand range of 150 and 200%, तभी जाके next allocation देखना, उससे पहले नहीं.
At this state of action क्या होगा मेरा next plan of action जो कि मेरा first supply and demand action plan है that will act over here. Okay, so this is my first point. With the first point of action, what I'll be doing, I'll be adding out the next. What do we see? We have a rejection at 150%, right? With the rejection at 150%, what should be your next plan of action? आपका next plan of action होना चाहिए in the continuity movement. In the continuity movement matlab whatever the previous supply in the bullish movement you can see that will act as your new supply in the moment. In this scenario, this entire movement in the structure will act as my current. In the current scenario, this is the TP1 what I'll be having for intraday. With that continuity, what do we notice? 150% rejection. With the 150% rejection, market tend to continue the movement. With 150% rejection, what should be the next step of action? 200%, correct? So do we have a 200% rejection as well? Yes, definitely. On yesterday's day, we had a rejection at this point. Let me showcase you in 1 hour, right? What do you notice over here? Did we had a rejection at this point? Yes, we did. With this, the market continued in the moment. That's totally fine for me. But एक ही चीज आप लोगों को याद रख के चलनी होगी कि मार्केट में इस करंट पोजीशन पॉइंट ऑफ एक्शन में क्या सर्कुलेटिंग बिल्ड हो रही है या नहीं हो रही है, राइट? क्या रिटेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं या नहीं हो रहे? So in this scenario, what is the next step? When the market has given the break of 200% and continuity, your new supply will be the previous. इस point of action में A supply will act as your current. So this is the new plan of action which will take the place at the current. ठीक है? So this is your plan of action of daily time frame. Daily time frame में एक ही चीज का allocation का याद रखना, जिसी भी तरफ का movement develop हो रहा है, जब तक selling pressure develop नहीं हो रही है, please don't look for an allocation of opposite direction. Opposite direction allocation तभी देखो जहाँ पे आपको properly selling pressure दिख रही हो. With the proper selling pressure, allocation in the markets identify करने में आसान हो. Okay, so definitely do the mathematical calculations. Mathematical calculations के साथ target अभी hit हुई है, right? With that, what are the next steps? We'll come down to 4 hours. In the 4 hours perspective, what are the major things that I'll be keeping in mind? The first major action plan that I'll be looking at this current state is in the entire movement. What are the major plan of actions? The supply allocation, correct? At this state, कौन सा है मेरा supply? This will act as my supply, right? So in the 4 hour supply point, what is the major thing that you have to look for? Allocation. What do we notice? We have a minimality zone of action. With the minimality zone of action, continuity. Right? With the continuity point, what do we see? Do we have a rejection at 150%? 150%. Yes. Right? When we had a 150% rejection and continuity kahan tak aayega? 200%. In this scenario, this is my 200% range. Before conversion of the green candle, अगर आप notice कर रहे हो इस point of action में, it was a red candle. Then it got converted into the green. Why it got converted into the green? If you're noticing at this point, the first wick generation was towards the short. Then in the continuity, the green candle got into the play, right? So hence, this will act in the zone of minimality, 150% M1. This is M1 scenario. With the M1 scenario, what is the next plan of action? The first movement plan. The first movement plan was post the minimality zone of action. Minimality zone of action ke saath, what do we notice? A break and continue. So what we'll be doing, we'll be marking 100% allocation, right? When we mark an 100% allocation, what do we see at this current point? Did the market tend to complete in a go? No, it didn't tend to complete in a go. So what will market try to do at this point?
the market will always try to hunt you out. मतलब 80% जोन ऑफ एक्शन से जब रिजेक्शन लेता है, M2 जोन ऑफ एक्शन क्रिएट होते हुए दिखती है, right? When M2 action gets into the play, what is the major consequences आप लोगों को फॉलो करके चलना है? M2 scenario 2.0. M2 scenario जब क्रिएट होता है, targets are always 200%. In this scenario, जैसे ही 100% complete हुआ, with the complete back through, what will market tend to do? Market will get into the zone of next. Okay, so 200% allocation point होगा at this current stage, because Q market has created as a M2 scenario of minimality. जब M2 scenario of minimality generate होता है, always you have to remember one thing. What should be the plan of action? The plan of action should be in not perspective of 150%. It will be always in perspective of 200%. Okay. With that continuity of the movement, the target hit हुआ है नहीं हुआ. So what I'll be doing? I'll be coming down to 1 hour. Mathematical numbers still remains the same in the action plan, because in the structure, this is the zone of conduct where the mathematical numbers works from. Swing low, swing high, retracement point, and follow through. With this follow through, the next plan of actions will be taken under the considerations. Right? So with this, what are the next steps that you will be following? Post marking the mathematical numbers as well, we will come down to 1 hour. So in this scenario, we'll look for the next point of interest, right? With the next point of interest, what are the major circumstances that you guys have to be following? आप लोगों को current scenario state में आना होगा. Current scenario state. Why? Because every Monday should be your starting point of the 1 hour time frame. Right? In this scenario, मेरा 1 hour zone यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि this was my Monday opening. Right? With Monday opening, circulating supply create हुआ है. Right? With the circulating supply, कल जो आप लोगों को वीडियो में explain किया था POI range of action, हर एक POI range mark कर लो and length identify कर लो. You will come to know. Right? Just one random example, I will showcase you out. ये मेरा POI है, correct? With the movement plan of action. I'm not calibrating any of the movement, right? What do you notice? Current. What do you notice? Current, right? What do you notice at this point of action? Current. Did I map anything? No. I've shown you in the video as well. With the video, 1 hour का live example भी देख लो, right? Any sideways or accumulation zone should always be to your previous zone of action. Okay. So in this point of action, this was the moment. Let me take one more POI. What do we notice? Same rejection point, right? Let's take one more POI range of action. What do we notice? Same rejection point, right? Let's take one more POI range of action. What do we notice? Same POI range of action, right? So always remember one thing. It doesn't matter what you're trading, what you're knowing. Till the time you don't know the basics, you won't be able to learn the markets in your naked eyes. Okay? So always remember this plans and follow through. Each and every point of interest is followed through your previous. Each and every POI range is generated to the same point. Each and every allocating range is generated to the one box of action. Right? हमेशा याद रखना, POI रेंज डेवलप हो रहा है तो प्रीवियस जितना है उतना ही डेवलप होगा. ठीक है? एक बॉक्स ऑफ कंडक्ट के साथ हाउ मेनी POI रेंज डिड वी आइडेंटिफाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, right? So that is how you look into the circumstances of a POI range of act. So in this scenario, what are the major things that I'll be following at this stage? Reallocation of the spectrum. When I look for a reallocation of the spectrum, what is the first action plan that will come under the part? The first action plan that will come under the part is through the previous. With the previous, what is the allocation at this state of movement?
The previous bullish movement was at this point of action. This will act as my new. Okay. With the new point of interest, what is the supply that will be converting at this range? The supply conversion, we have a minimality? Yes, we do have a minimality. First target is always directly 150%. Blindly allocated to 150%, the targets will be hit, right? So that's how market will tend to follow the rule. So this will be following in the Q2 entirely till July. Okay. So this is the plan of action that you have to be focusfully working on, right? Is target hit होने के बाद definitely there was a POI range working over here. So what I'll be doing, I'll just remark out the same zone of action over here, right? Did it exactly work the same as my previous? Yes, definitely it worked the same as my previous. So at this point of action, what will be the next step of plan? The previous movement in the allocation in this scenario, this is my previous allocation, just to have a second confirmation point. When you want to have a second confirmation point, always remember you have to take the movement from the demand allocation and the retracement allocation, right? With the minimality, my supply got completed, right? So what should be the next plan of action at this stage? Can I look for a new zone of action? No. First, we have a POI range. Always the POI range will be in the act. Is this the right measurement? There is no break of structure, so we won't take the wick. So always remember to take it with the body. In the body scenario, what do we notice? Market has taken a rejection from 100%. With this, what is market currently trying to indicate you in 1 hour? Market is trying to indicate a movement which is in the position point. In the position point of zone, how do you look into the circumstances of in position point zone? Rejection and continuity. With rejection and continuity, what do we notice? A minimality zone of action is there in the plan. So the next plan of action will be impacted with my 200%, right? If you want to play safe at this point because it's still morning, your first target will be 150%. Okay, so this is the plan of action that you will be following for gold 1 hour. Coming down to 15 minutes. In 15 minutes, what is market trying to do? मार्केट आज के दिन में एक सर्कुलेटिंग सप्लाई बिल्ड किया था. सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ मूवमेंट रीडेवलप हुई थी. मूवमेंट रीडेवलप होके कंटिन्यूटी में स्ट्रक्चर डेवलप हुई थी. करेक्ट. सो इन दिस पॉइंट ऑफ एक्शन, व्हाट इज द फर्स्ट प्लान दैट यू विल बी लुकिंग फॉर? Your demand will get converted into supply at this first place. So in this scenario, this was my previous last retracement demand, which will act as my current supply. What do we notice? Market had taken a rejection. With the rejection point continuity, with the continuity 150% breakthrough, right? With the 150% breakthrough, what are the plan of actions? The first demand allocation will be as prospective as the movement of the previous, right? So in this point, this will be my first demand allocation. With the first demand allocation, market continued the movement. With the continuity in the movement, what do we notice? We notice a break and continue. What is the next step of action plan that will be taken under the consideration? The entire POI range, right? So the entire POI range will be the next act of plan. In this scenario, this is my next act of plan. What do we see? We see a break and continue. In the break and continue, do we have a minimality zone? Yes, we don't have a minimality zone. So we will be just marking out the zone of action of 150%. Did the market tend to take a rejection at 150%? With the 150% rejection, what is market trying to do at the current state? Market has created a demand. Demand should be always as per the previous in this state of action. This is my supply, which gets converted into the demand. Did the market tend to take the rejection as per the requirement? Yes, it did. So what is the next step? This is my supply with the supply action plan.
we will look for the continuity of the 100% shocker. Okay. So first TP plan of intraday will be in the circumstances of 3350. Then on the continuity, the next target will be 3360. Then the swing trade will get allocated and look in perspectives of 23390 and 3410. Right? Any doubts in gold? Please do let me know. Okay. So these are the plan of actions जो आप लोगों को follow करके चलनी होगी. And जो भी doubts है, please do ask. Any doubts, guys? Don't hesitate to ask doubts. Okay. So with this, we will start with BTC. Wondering how you are able to explain the same thing every time with a different perspective. क्यों, उस्मा? Same perspective में थोड़ी market रहता है. Every day the market generates a candle, right? So perspective should change every time when you are explaining. If it's the same perspective, the market won't follow the same rule of action, right? So always you have to remember two things. When to change the perspective and where to change the perspective. अगर perspective change करना आप लोग सीख गए ना, आप लोग directly market understanding सीखने में माहिर हो जाओ. Okay? So with that, let's continue with BTC. This is always our best. The moment action plan. Sir, my comment was for last day video. Last day video matlab? Okay. Starting with BTC daily time frame. What are the major things that you guys have to be working over here? At this current time frame of daily time frame, always remember to mark out the POI range. In this zone of action, this is my entire POI range which will be taken under the consideration. With this consideration perspective, what should be your allocation looks like, right? So the allocation will be looked in perspective of a POI zone of action, right? When you're looking in the zone of POIs, what are the first action plan that will be coming under the circumstances? The zone of conduct. The zone of conduct, the inducement range. This is our inducement range. With the inducement range, there was a breakthrough. With the breakthrough, हमको यहाँ पे buying pressure दिखने को मिली थी.
right? With this buying pressure, what are the major circumstances आप लोगों को check करके follow through में रहना चाहिए? At the state, where is our internal liquidity point? At the current point of interest, ये हमारा internal liquidity zone, right? Internal liquidity zone में एक चीज याद रखना, जो current movement candle है, that will be bigger, and remaining candles, the second candle will be shorter than the first candle. मतलब the top shouldn't be breaking in the short side, long side के लिए bottom break नहीं होना चाहिए previous candle का. So that will be the zone of action of internal liquidity point. Right, with this internal liquidity point, हमेशा market liquidity hunt करने आती है. In this scenario, this was my internal liquidity point. This is my entire demand surplus. Why this is a surplus? Because market में wick create हुआ है. Wick create होने के बाद definitely there is a break of structure, so the surplus will be taken under the consideration. यहाँ पे allocation कहाँ पे होगा? S2B1 setup के साथ allocate होगा. With S2B1 setup, market took a rejection from the spot on. जब मार्केट स्पॉट ऑन से रिजेक्शन लेता है, फर्स्ट एक्शन प्लान क्या है? बाइंग जोन ऑफ एक्शन कंडक्ट हुआ है. वाई डायरेक्टली दिस जोन? अगर मैथमेटिकल नंबर्स डाल के चेक कर लो, दिस इज एग्जैक्टली द बाइंग स्पॉट. विद द बाइंग स्पॉट, द TP2 was hit. What is the retracement that you will be looking here? Retracement उतना ही देखो जितना आपका previous point of interest में होता है. At this current stage, the previous point of interest is supply converted into demand. So in this scenario, this is my supply, which will get converted into the demand zone. Right? With this demand zone of action, market tend to continue the movement. Right? So when the market tend to continue the movement, what are the first steps of action plan that you will be taking? The entire zone of action, with the entire zone of action, calibrating it with the next. How will you calibrate it? With the exact rejection point of the demand zone, right? जैसे ही demand zone of action mark out हुआ, what are the next steps that will be following over here? The next steps will be following is reallocation of the spectrum through the mathematical number. ये जो rejection लिया है, this is also a mathematical rejection. With the mathematical rejections, market is tend to come down. Right? What is the plan of action? There is a small inducement in the daily. With the small inducement, plan of action one, this will act as my first demand. Right? When it act as my first demand, what is the steps that market will follow at the current state of action? The zone of conduct, with the zone of conduct, continuity, in the continuity 150%. Right? So at this current state, this was my 150% range. So I'll just mark it up. Right? With the marking, what did market tend to do? Market took a rejection. So what will be the rejection allocation which will be taken under the consideration? Market from bullish movement, it got converted into bearish. So your last demand will act as your current supply, right? With this plan of action, what do we notice? Market had taken a break and continued. So 150% will be the supply range. 150% allocation तभी देखना आप लोग जब आप लोग 100% of the zone break होके continuity में दिखती है. Right? Always retracement will be of 150%, 98% of the time. 2% of the time it might be 200% on the break of 100%. Okay? So with that, continuity in the moment के लिए first plan of action will be this. This is your first pure demand. With the first pure demand, continuity, there was no break of structure, so we'll take it from the body. With the body allocation, there is a break again. What is the allocation point? 150%. So at this state of action, do we have a rejection from 150%? Yes, we do have a rejection from 150%. Right? So when there is a break of structure, then we will be looking for with wick calibration. Right? When we do a with wick calibration, post the allocation point, what do we notice? It's a 200% rejection. With the 200% rejection spot on, what is the next steps that we'll be looking over here? First allocation of the supply. This is the first supply allocation that we are having. With the first supply allocation,
What is the plan of conduct that you will be working on at this point? You will be looking for supply converted into demand. यहाँ पे डिमांड कौन सा सेलेक्ट करोगी, सब सॉरी कौन सा सप्लाई सेलेक्ट करोगी? At this current stage there was only one retracement point, which is this, right? This will act as my current demand. So this is my current demand. With the current demand action plan, market tend to continue, right? In the continuity, what is the movement that we have seen? We have seen a rejection from 80%. When there is a 80% rejection, what is the next plan of action that will be taken under the consideration, which will be 200% zone of action on the break. Break जब तक नहीं होता है तब तक नहीं. Okay, so this is the plan of action you guys should be having in the swing trade of action, right? With the swing trade of action, mathematical numbers का target आके 96,132 का है. So with that, we'll come down to 4 hours. 4 hours में, what are the major circumstantial plan of evidence that you will be looking for? A movement calibration through the previous. अगर notice कर रहे हो, ये entire zone of action is in the sideways movement, right? So this sideways movement is of nice 20,000 points. So should you be leaving the trades? No, you shouldn't be leaving the trades, right? So only one thing you will be working over here is allocation of 1-to-1 ratio. What is 1-to-1 ratio? Every movement will be having a previous action plan. Okay. Same cheese karna hai yahan pe. This is the point of action one. Just calibrate the zones. Is it the same? Yes, it is the same. Let's calibrate one more zone. It is the same. Yes, it is the same. Let's calibrate one more zone. Is it the same? Yes, it is the same. Let's calibrate one more zone. Is it in the same zone? Yes, it is in the same zone. So what is the major things that you will be following over here? Opposite break of conduct. Whenever there is a opposite break of conduct, you have to just make sure a fake break is given. With the fake break, continuity in the right direction. अगर मार्केट बेरिश होना है तो बुलिश की तरफ ब्रेक देने दो, then the continuity towards the short. अगर मार्केट बुलिश होना है तो बेरिश की तरफ हंट करने दो रिटेलर्स को, then continue the movement, right? इस circumstances में what should be your next major plan of action? The next major plan of action is reallocation of substantial movements. Reallocation of substantial movements मतलब प्योर रेंज तो आपको पता है, प्योर रेंज होने के बाद अभी भी उस जोन ऑफ कंडक्ट में ही है, बट एक्शन प्लान 4 आवर्स का हमें बता रहा है 96,000. बट व्हाट शुड बी द सॉरी डेली टाइम फ्रेम का प्लान ऑफ एक्शन बता रहा है 96,000. बट व्हाट शुड बी योर नियरेस्ट प्लान ऑफ एक्शन? मेरा nearest plan of action will be taken under the consideration of new supply. In this scenario, this is my new supply. With the new supply, what will the market tend to do? Market took a rejection. कितना rejection लिया था? As per the previous daily time frame, this was the rejection point that we have taken under the consideration. But 4 hours may we do have a conversion, right? What is that conversion? This is the new conversion, right? With the new conversion point of action, the allocation will be taken under the consideration, right? With this consideration point, is it matching with my zone of action? क्या गलत कर दिया? Right? So with the body allocation to the body circumstances. With that, what are the next steps of action plan that you should be following? Whatever the supply you had marked, the supply marking will be taken under the consideration over here. Right? At this point of action, what do you notice? There is exactly 100% coverage. Keeping in mind there is a minimality in 4 hours as well. When there is a minimality zone of action created, what is the first action plan which will be taking under the consideration? First considerative point of 4 hours will be looked at 150%. Why 150%? Because M1 scenario was generated, not M2. With this, we have a break and continuity. This will be the Minimality Act. With the Minimality Act, the next target plan for 4 hours will be
at the zone of 150. So when 150% zone of action gets into the play, the first circumstantial move will be at 89,353. So this will be the plan of action at the current stage. With this plan of action of the current stage, what are the next plans that we'll be looking for? Definitely the market is in the POI range, so I don't want to mark each and every candle here, right? So we will come down to 1 hour. When we come down to 1 hour, what are the steps and action plans that we'll be following? The steps and action plans, what we'll be following is just a circumstantial circulating supply. When the circumstantial circulating supply is generated, what does the market tend to do? In 4 hours POI के अंदर भी बहुत सारे POIs बने, right? So in the zone of action of 1 hour, this is my one, sorry, this is my one. With the one, I'll just remark the second. The second one is also working. Third one is working. Fourth one is working. With the fourth one, fifth one is working. With the fifth one, where is the next? Sixth one is working. With the sixth one, seventh one is working. With the seventh one, the eighth one is working. With the eighth one, the ninth one is working. Right? So each and every point of action तुम बताओ कौन सा टाइम फ्रेम में क्या करना चाहिए. अगर ये कोई करके दिखा देना बिना ये वीडियो देखे या बिना कल का वीडियो देखे, मैं मान लूंगा कि he knows about the markets. ओके, सो विद दिस प्लान ऑफ एक्शन आज के दिन में नोटिस करने के लिए हम जाएंगे 1 आवर का हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एक्शन. 1 आवर में सेलिंग के लिए देखना है तो हमें क्या चाहिए? त्रिशूल ए एक्शन पॉइंट चाहिए, राइट? बाइंग के लिए देखना है तो हमें त्रिशूल ए एक्शन पॉइंट में चाहिए. दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल लिक्विडिटी पॉइंट्स. When there is external liquidity points generated in the market will take reversal automatically in this zone of point where we had that threshold over here. One, two, three, right? Where is the reversal point? One, two, three. Long के लिए where is the reversal point? One, two, three. Short के लिए one, two, three. Always remember, wherever there is a reversal, the definite movement action plan is taken under the consideration through the previous, right? With this, what will be the allocation point? The allocation point of the movement will be taken under the consideration of the previous. We have a liquidity calibration. With the liquidity calibration movement will get allotted post the hunt. When is the hunt taken under the perspective? The hunt is taken under the perspective of the directions. The last candle of liquidity calibration will act as your current. In this scenario, this is my point of interest one. There is a break and continue of liquidity calibration. When there is a break of liquidity and calibration, 150% and 200% mark out. 80% of the time, the market will take rejection from 150%, 20% of the time, 200%. But accuracy wise, your closure in green will be 100%. Right? So that is the plan of action that you have to be following at each and every point of interest. Always remember that. Okay. So always remember to wait in patience. While waiting in patience, only one thing I could love to say is don't trade randomly by someone's thoughts or someone's ask. Learn, execute by yourself post learning. That is the only thing what I'll request from you. Okay. With this action plan, what is the next movement calibration that we'll be taking under the consideration? In the movement continuity, we do see a POI. So where is my 15 minutes POI? This is my POI range of action, which will act at the same point. With the same point of action, POI took a rejection with the rejection perspective. Market gave a break towards the long, so the direction movement which is converting is towards the short at the current small trade. With the small trade action plan, what is the first circumstantial movement that you will be looking for? The liquidity calibration body part
to the retracement point. So this is your first point of action which the market will be following through, right? So this is the body calibration. But sometimes you guys will be having a confusion of I should be taking the last part. Definitely take the last part, I don't have a problem. But allocation of the movement should be in the right directions. That is the only key respect they ask from you, right? At this state of action, this is my previous demand. With the previous demand allocation, the movement will be taken under the consideration at this point because we don't have break of structure. बॉडी के साथ कंटिन्यूटी के साथ 150% 200% रिजेक्शन. मार्केट ये रूल फॉलो करता है. एक ही चीज आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि पैनिक सिचुएशन में एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए. वो छोड़ के कुछ भी कर लो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है. बट एक ही चीज मैं पूछूंगा कि डायरेक्शन में मार्केट है या नहीं, राइट? एट दिस करंट स्टेज यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखने को मिली है, तब जाके यू अलोकेट द न्यू मूवमेंट, राइट? ये आपका नया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, राइट? सो यू टेक इट फ्रॉम द डिमांड entire wick position with the wick position reallocation, right? So what do you notice over here? We have a 200% rejection, but that zone of conduct is always not right. So what you have to do, you have to first follow the first demand action. फर्स्ट डिमांड एक्शन फॉलो किया, उसके बाद सेकंड डिमांड एक्शन फॉलो करो. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स टिल देन, नो. पोस्ट दैट मार्केट टुक ए रिट्रेसमेंट एट दिस करंट स्टेज, व्हाट विल बी द रेंज ऑफ एक्शन? पीओआई में जितना मूवमेंट है उतने का ही रिट्रेसमेंट दिखना चाहिए. अगर उसके ऊपर ब्रेक होता है 200% के ऊपर, market will tend to reverse. So in this scenario, market took the rejection from 150%. What is your next target plan at the current state? There is no break of structure, so this is my new plan of action. Right, so this is my 1 hour. With 1 hour, what are the next step of plans that you will be looking at? The next plan of action will be in 15 minutes. So in 15 minutes zone of action, what do you notice? Market is in the exact circulating supply movement. When there is an exact circulating supply movement, what are the major things which will be taken under the consideration? सिर्फ आज का दिन का मूवमेंट प्लान, आज का दिन का मूवमेंट प्लान ऑफ एक्शन में this is my first demand. With the first demand allocation of the previous, right? With the previous allocation point, what do you notice? Where is the market taking rejection from? A small 100% zone. Keeping in mind, my 1 hour target towards short is not yet completed, right? So intraday position of long holdings will be considered in perspective of 1 hour. So let the 1 hour indication complete at 83,000. Then we will look for a long plan of action, right? In this scenario also, if you guys want to cross verify whether I am saying lie or not, each and every point of actions of POI will be the same. POI 1, POI 2, POI 3, POI 4, POI 5, POI 6, POI 7, POI 8, POI 9, POI 10. दिखा दो, who can do it? Whatever doubts you are having in perspective of BTC, please do ask. कोई doubt नहीं है तो we'll move for the next. Plan of action will be taken under the considerations to the previous, and reallocation will be taken under the consideration of to the next. ठीक है? अरुंधति मैम क्या कर रहे हो गोल्ड में? वेट माय डी.
Any doubts you guys are having, please do ask. If no doubts, सर इंडियन मार्केट्स मंडे तक चुप बैठ जाओ. देख लो ये इंडियन मार्केट्स. यहाँ पे स्विंग ट्रेड होल्ड करोगे ना, आपका अकाउंट ब्लो होगा उतना ही. मतलब जितना कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हो उतना ब्लो होगा. इंट्राडे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अगर आप लोगों को करना है तो कर सकते हो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है. राइट. So as per the standards, right, market follows from Jan as Q1. Okay. But as per the business, March is the Q1. Okay. So now is the buying slot. सबका financial year ending खत्म हुई है. Now is the buying slot what the market will tend to showcase you. Right? So always wait. ये एक हफ्ते वेट कर लो, कल मार्केट छुट्टी है. मंडे के दिन जो प्लान ऑफ एक्शन डेवलप होते हुए दिखेगी, उस प्लान ऑफ एक्शन के हिसाब से ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे ना. एक दिन में क्या क्या कर लोगे आप बताओ. तो वेट कर लो. हाँ डेफिनेटली. यहाँ पे एंड बीटीसी में एक दिन में बहुत कुछ किया जा सकता है, बट इंडियन मार्केट्स में नहीं. इंडियन मार्केट्स में बहुत कुछ तभी किया जा सकता है जब आप स्विंग ट्रेड में हो. सो ऑलवेज लुक फॉर ए ट्रेड्स इन स्विंग, full swing. Okay. Sir, my comment was for last day video. Sideways zone. Okay. Okay, no worries. All the new members, यहाँ पे ना टिप्स दिया जाता है, ना यहाँ पे ट्रेड ऑफ अलोकेशन दिया जाता है. Give me your 22 days, 1.5 years of back testing, 1.5 years of forward relay bar testing. With that 1 month of live analysis, then come with a small capital to build the confidence. And compound the money from the execution, following the proper risk to reward. So these are the only things I ask. इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं पूछता हूँ. एंड पुराने लोग जितने भी है, प्लीज फॉलो एंड स्टार्ट डूइंग. पुराने लोग जो भी डाउट्स है लिख लो, उसके बाद पूछ लेना. सर फॉरवर्ड रिले बार इज लिमिटेड to 6 months only. 9K candles in gocha. मैंने कब बोला नहीं करके. 666, 3 different charts, 666 months. Sir, having doubt in S1B1 and S1B3 setups appears to be S1B1 initially. How to differentiate? Can you explain the order? In 8th April. उसमा S1B1 setup खत्म हो गया मार्च में. ओके. अप्रैल में S2 setups आइडेंटिफाई करो.
And first of all, allocate the movement plan of supply and demand and mathematical numbers first, no? Okay. You're looking in perspective of back testing, yeah, you can look, not an issue. Okay. Only S to B to setups will come under the play. कोई भी doubts है, please do ask. सर थोड़ा zoom कर दो. Definitely यार. मैंने मना कब किया? Right, with this, what we'll do? Wait, let's do the markings. नहीं नहीं यार. There is lot of thing which is there in perspective of quarterly. मार्केट में एक ही चीज है लाइफ टाइम, वो है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स. 1 hour daily. 1 hour के हिसाब से.
This marking I am doing for you guys so that you guys, when you're doing back testing, it will be easier for you, or forward testing, it will be easier for you. Okay? We. सर बहुत सारे लोग आपका कॉपी कर रहे हैं, मैं क्या करूं? उनका भला हो रहा है, राइट? तो आई एम हैप्पी. कोर्स बना के भेजे तो यार वो सब करेंगे तब देखेंगे. कॉपीराइटेड वर्क है ना, बेचने दो. वी हैव a different plan of action all put together. ये थोड़ी मैं कट कॉपी पेस्ट कर कैसे करूं? Sir, if every quarter market changes the execution plan, then how to identify new plans? Every quarter. Just asking because you plan to end the stream soon. Can you create a detailed video on that? 3 महीना हूँ अभी भी, टेंशन मत लो. ओके उस्मा.
100% टारगेट हिट गाइस। कुछ नया बताओ। नया क्या बताओ? रोज टारगेट हिट बोलते हो। एसएल तो दो। चलो एसएल चाहिए। नहीं, स्ट्रीक नहीं ब्रेक करने वाला। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट स्ट्रीक ब्रेक। खुद से होता है डिफरेंट सिनेरियो, जान मुझ के सब ने। मानी मानी मानी। मार्केट में हारोगे कब? जिस दिन मेरा ब्रेन फंक्शनैलिटी कम होगा उस दिन। जिस दिन मेरा डोपामाइन इफेक्ट पैसों के ऊपर से उठेगा तब। एंड वो कभी होने वाला नहीं है। सो भूल जाओ हारने की चीज। लोग गिरा सकते हैं, तोड़ सकते हैं। दैट इज अ टोटल डिफरेंट सिनेरियो। बट वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, नॉलेज इज परमानेंट। वो कौन लेगा? क्योंकि लोगों को नॉलेज की जरूरत नहीं है, लोगों को पैसों की जरूरत। बट लोगों को ये नहीं पता है, अगर वो नॉलेज है तो पैसे ऑटोमेटिकली आएंगे। सो यस, डेफिनेटली। इसे यूज कौन कर रहा है?
टॉम अकेडमी, हाँ वो पूछ के ही कर रहे हैं, सो नॉट एन इशू. कोई भी डाउट है प्लीज डू आस्क. MTSL zone of actions डेफिनेटली एक्सप्लेन करेंगे बिफोर क्लोजिंग द स्ट्रीम. आई विल एक्सप्लेन. ठीक है. इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में दो बुक लॉन्च हो चुकी है, क्रिप्टो वर्ल्ड एंड द अनब्रेकेबल. Links are in the bio. You guys can go and purchase it if you guys want. Else, no force. Okay. एंड जितने भी नए लोग हो, क्या कर रहे हैं हम यहाँ करके कंफ्यूज हो रहे हो, तो एक ही चीज बोलना चाहूंगा. गो टू द होम टैब. Once you go to the home tab, first section you will complete mathematical concept. Second section you complete supply and demand. Third section you will complete liquidity and volume due. Right? उसके बाद दो तीन और sections है, वो देखने की जरूरत नहीं है. That is live trades. But yes, to learn, these are the three main sections which you guys can go and check. Okay, guys. Stream will be there for next 1 hour. Whatever doubts you guys are having, please do ask. आपके जैसे कैसे बन सकेंगे? मेरे जैसे मत बनो. खुद के जैसे 100% बेटर इंप्रूवमेंट के साथ खुद के जैसे बनना सीखो. Yeah, definitely you can take the qualities, not an issue. But be a replica of yourself. Don't be a replica of others. मेरे जैसे बनने के लिए पहले तुम्हें 3 बजे उठना पड़ेगा.
जो तुम्हारा हाथ से होने वाला नहीं है तो रहने दो. Sir, can you showcase me your daily calendar once? Daily calendar देख के क्या करोगे? उसमें मेजर शेड्यूल सब नहीं है. हाँ, but definitely it's packed from 7:30 से लेके नाइट 10:30 तक. But 3 o'clock से 7:30 तक क्या होता है वो किसी को नहीं पता होता. Good morning, sir. Just joined. What did I miss in last 3 days? I must have missed a lot for sure. We'll definitely go through all the streams. But any particular to watch first? Good morning, Nilesh. Hope everything is fine at home. Just rewind and check today's video. Right? I have given you in detail explanation of sideways zones. How does sideways market work? And how to execute in sideways market zones for entire calibration. You can look in perspective of yesterday video launch in the evening. Everyone has got wrong about sideways zones. Go and watch that video so you'll understand how to execute the trades. Ha. And yesterday morning stream you can go and check for allocation and calibration perspectives. We have changed a bit. Yeah, this two sessions. They are day before yesterday. It was nothing. It was the same. So no hurry burry. But yes, these two are the major things. Okay. Nilesh, the most important thing is stream will start from 8 a.m. moving forward. Going forward, okay. Anyone has any doubts, please do ask. Sir, Indian markets. अंजलि तुम और तुम्हारा इंडियन मार्केट्स. वो बीटीसी के ट्रेड में इंडियन मार्केट्स देखना है तुम्हें. हाँ.
स्विंग ट्रेड में आज नहीं देने वाला हो, टेंशन मत लो। स्विंग ट्रेड हम लेंगे मंडे को ही, उससे पहले नहीं। अगर S2B1 सेटअप यहाँ पे क्रिएट होता है, कंटिन्यूटी में ब्रेक थ्रू आती है, then allocation will be till 83,866। नहीं बोलना था। चलो यार, रो रही है वो, मैं क्या करूं। इंडियन मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स। वो ट्रेड में ऑलरेडी बैठी है, ठीक है। 84,600 से बैठी है एंड बोल रही है इंडियन मार्केट्स। सर मेंबर्स ओनली वीडियो भी डालना शुरू कर दो ना। ये मेंबर्स ओनली वीडियो क्या होता है? आपके चैनल में जाइए। आपके चैनल में जाइए, वहां पर मेंबर्स ओनली वीडियो भी बना सकते हो। ये भी ऑप्शन है क्या? यूट्यूब में ये सब है? ओके। नितेश लास्ट टाइम ही बोला था। ओके, मैंने मना किया था करे। नहीं नहीं, डोंट वरी गाइस, यू डोंट हैव टू पे। 149। हाँ, वही वाला ना। नहीं नहीं, लेट देम यूज इट फॉर फ्री। नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। वैसे देखा जाए तो मेरा हर एक वीडियो मेंबर्स ओनली जोन में रहना चाहिए। फ्री फ्री, टेक इट फॉर फ्री। हर एक चीज फ्री में दान करते रहते हो, तुम कैसे कमाओगे?
मैम आप एमएनपी में नए हो so that's totally fine. I don't have to give the explanation for that. मेरा एक उसूल है, अगर हद से ज्यादा कुछ है तो दूसरों की मदद कर दो जिसकी जरूरत उन्हें है. So yeah, definitely. फिर से इसके ऊपर मैं कुछ और लगाऊंगा. रख लो सर, ले लो आप, प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे को. ऊपर तो नहीं लेके जा सकता हो, करेक्ट. जो भी है यहाँ पे ही है. डेफिनेटली पैसे ऊपर तो नहीं लेके जा सकते हो, बट जब तक इस दुनिया में हो आपको ऊपर लेके जाएगी, वो याद रख लेना. ओके. बट जैसे जैसे पैसे आपको ऊपर लेके जाएगी इस दुनिया में, वैसे वैसे मदद करना भी सीख लिया करो. जरूरत हमें है तो फ्री में सिखा रहा हूँ ना, सीखो ना वेंकट. राइट. पता है, बहुत सारे लोगों की जरूरत है, उसके लिए ही तो मेंबर्स ओनली में कोई वीडियो नहीं डाला. Sir, can you share an overview of your published books? What are they about? One book is about in detail explanation about crypto. How does crypto market works? How does decentralization works? How does blockchain works? Right? What are the major strategies? What are the allocation points? वो सब उसमें है. And what are the risk to rewards is there in it. Second book, what is that? The Unbreakable, right? How do you build a mindset of a successful person at the stage of failure, right? No one sees the success directly, everyone sees the success post the failures. So, how to keep your mind steadily and calm and be consecutive while you're in the state of failure, and how to convert your failure into success. Okay? Sweet and short. Third book is launching very soon. For Indian continents. European continent में सब हो चुका है already. It's from 0 to million. How can a person make from a zero to $1 million? And crowd response is fab on that. It has broken the records of my crypto world as well as the Unbreakable. Let's see how does it do in Indian markets. वेंकट, जब भी कुछ डाउट पूछता हो डाउट नहीं रहता है, बट ऐसे सवालों में फर्स्ट रहते हो वेंकट. ट्रेड्स दो, हमें जरूरत है, राइट. लेवल अलोकेट करो, इस ये सब चीजों में फर्स्ट रहते हो. Any doubts, guys? Please do ask. Stream will be there for next 45 minutes.
150 ऑलरेडी हो चुकी है. ओके, सो ये यहाँ पे रहने दो. ओके उसमें ट्रेड ट्रेड में नहीं हो करके क्या क्या सवाल पूछते हो उसमें. तो नाश्ता हो गया क्या? नाश्ता मेरा 7 बजे को ही हो गया. ट्रेडिंग रिलेटेड पूछो मैम. गुड मॉर्निंग ब्रदर. सर थंबनेल चेंज कर दो. किस चीज का थंबनेल चेंज? लाइव स्ट्रीमिंग का. वर्षा को बोल दो. अंबिका, द बैक टेस्टिंग व्हाट यू आर डूइंग ना, मिनिमलिटी की गलत कर रहे हो. M2 गलत कर रहे हो. M1 सही गया था कल, बट आज M2 जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो. Allocation points of 1 hour should be always in perspective of the body lineup, correct? आप मार्क कर रहे हो डायरेक्टली फ्रॉम द विक. Circumstantial moves आप मिस कर रहे हो, right? So that's the reason the drop will be taken under the consideration to the next and the previous. Rebound effect is done. Rebound effect हमने कब किया था? याद नहीं है, मैं चेक करके बोलता हूँ. Rebacking day before yesterday evening, rebound day before yesterday morning.
किसमें चेक कर रहे हो भरत? सर MC1 का लेवल्स छोटा आता है और MC2 का बड़ा, ये दोनों ड्रॉ करके तो इसमें वन ला, इसमें MC1 हिट होने के बाद MC2 हिट होने का होल्ड करना है ना? किस चार्ट में बात कर रहे हो, किस सैनिटी में बात कर रहे हो, वो बताओ। BTC में MC1 वर्क होता ही नहीं है, मैंने कब बोला MC1 वर्क होता है करके? BTC में सिर्फ MC2। रिसीवेबल, थैंक यू, विल चेक। सर 0 to 1 million का लिंक शेयर कर दे। अभी लॉन्च नहीं हुआ इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स, एशियन सब कॉन्टिनेंट्स में भी नहीं हुआ, सिर्फ यूरोपियन इसमें। लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, फॉलिंग डाउन, फॉलिंग डाउन। दैट्स अ पोएम। हाँ यार, कॉन्फ्रेंस में एक बच्चा सुन रहा था मेरे बाजू में बैठ के तो दिमाग में रह गया। उसमें बाबा ब्लैक शिप भी थी। क्रेजियस्ट पार्ट। वो फुल रिंगटोन के साथ बाबा ब्लैक शिप करके था उसमें। सो लिटरली उस कॉन्फ्रेंस में मैं आधा टाइम हंसा हूँ। नहीं नहीं, मेरा नाम होगा ना उसमें, नितेश पवार करके, बुक के ऊपर भी। हैव ए सेकेंड कंफर्मेशन, बुक के ऊपर कवर पेज में मेरा नाम होगा नितेश पवार करके। कॉपीराइट सब चेक करना होता है ना, अगर बुक ऑलरेडी है इंडियन मार्केट्स में तो मेरा नाम यहाँ पे दूसरा होगा। ओके। कितने ट्रेड में हो सर? आज के दिन एक ही ट्रेड में हुआ, BTC शॉर्ट, S2P1 सेटअप के साथ। यहाँ पे एग्जीक्यूशन हुआ था।
सर आपकी बुक अनब्रेकेबल हिंदी में है क्या? नहीं है सर। All the new members, welcome to the stream. जो भी doubts है, please do ask. इंग्लिश थोड़ा वीक है इसलिए पूछा. Okay, get it. आप गोल्ड में ट्रेड नहीं लियो, आईडी में नहीं लियो, स्विंग चल रहा है. 89.75, 89.73 उस पॉइंट ऑफ एक्शन से चल रही है. ओके, बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने थे आप लोगों के लिए. आज हम माइनर फॉल के बारे में बात करेंगे, ठीक है? एंड प्री मैच्योर्ड. अंबिका, अंजलि, फाइजा, श्रेयस. वॉल्यूम ब्रेक स्ट्रक्चर, ओ वे उसके लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए. विल डू दैट ऑन मंडे. आज छोटा छोटा टॉपिक्स कवर कर. ठीक है. कोई भी डाउट है मार्केट के रिगार्डिंग, प्लीज डू आस्क. सर आप ऑर्डर ब्लॉक क्यों काम नहीं करते? ऑर्डर ब्लॉक में क्या काम करेंगे? ऑर्डर ब्लॉक इज माय पीओए रेंज, राइट? जहाँ पे मार्केट फिर से आएगा करके बोलते हैं, राइट? उस पॉइंट ऑफ एक्शन में मेरा मैथमेटिकल नंबर रहता है. तो मैं प्रीवियस चार्ट को क्यों ढूंढता बैठूं? अब इस पॉइंट ऑफ एक्शन में मेरे को ढूंढता बैठूंगा तो मेरा टाइम तो उधर ही चला जाएगा, करेक्ट? So I could love to save the time rather than wasting it on identifying an order block. एंड मेरे को दूसरों का कॉन्सेप्ट्स कॉपी करके मजा नहीं आता. ट्रेडिंग दुनिया में कितना कॉन्सेप्ट है सब देख लिया. सबका एक्यूरेसी इज एट 63, 67, 73. हाँ, the recent best accuracy setup what I looked was which one? MMC 78%. That was the highest. So I don't like to copy others.
You purchased the courses. Yes, few courses I purchased to understand what they are teaching. बट वो जो वीडियोस वो लोग यूट्यूब में डाले हैं ना वही वीडियोस कोर्सेस में भी बेच रहे हैं दैट्स द गेम बेस्ट गेम आई हैव एवर सीन लोगों को उल्लू बनाना गुड मॉर्निंग राघव व्हाट इज एमएमसी मार्केट मेकर कॉकपिट हु ओन्स दैट कॉन्सेप्ट मार्श एंड मैकलेन कंपनी करके है दे ओन इट so mmc trading is identified by them what is mmc market maker cockpit patel okay so that concept works on two critical point aspect zones of price making a flow risk management, right? जब भी मार्केट में एक फ्लो रहता है राइट उस फ्लो के हिसाब से रिस्क अलोकेट होती है जस्ट फॉर एन एग्जांपल समझो ये प्राइस एक्शनल पॉइंट है राइट इन दिस व्हाट इज द फ्लो रिस्क द फ्लो रिस्क इज इन परपेंडिकुलर ऑफ ईच एंड एवरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट्स राइट और इस आपके हिसाब से ईच एंड एवरी हायर हाइस right? So how do you manage the risk at this particular point? Execution point will be in perspective of the first here, right? Risk to reward that will they follow is in the swing trade of 1:2 and hold through. And this is looked in perspective of 1 minute. मेरे को पता नहीं था 1 minute में देखना होता है and 5 minutes में. अगर ये सिनेरियो होता तो मैं चेक ही नहीं करता. But yeah, 78% वर्क होती है. बैक टेस्ट करके चेक किया. लाइव टेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है. टीम कर रही है नेक्स्ट वीक तक अपडेट आ जाए एमएनसी का मतलब है मनी मेकिंग कॉन्सेप्ट ओह नाइस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो गया अभी मनी मेकिंग कॉन्सेप्ट का व्हाट इज नेक्स्ट बीएलए सॉरी बीआरए क्या व्हाट इज बीआरए ब्लो रिटेलर्स अकाउंट
कुछ भी बोलते रहते हो. सॉरी, BRA नहीं, BBA, ब्लो बैंक अकाउंट. तुम हंसाओ मत सुबह सुबह अंबिका. बैक टेस्ट कर रही हो, बैक टेस्टिंग कंप्लीट करो. अभी M3 है मिनिमलिटी का तुम्हारा. Stream will be there for next 15 minutes. Whatever doubts you guys are having, please do ask. एक चैनल है यूट्यूब पर, मार्केट मिरर कॉन्सेप्ट, कैंडल किंग करके. ओके. नाइस. जो भी बैक टेस्टिंग फॉरवर्ड टेस्टिंग स्टेज में है, लाइव एनालिसिस स्टेज में है, डाउट्स लिखो, पूछो. एंड ऑल द न्यू मेंबर्स, वेलकम टू द स्ट्रीम. आई एम वॉचिंग MC प्लेलिस्ट. हाँ, क्या हुआ राघव वहां पे? एनी डाउट्स यू आर हैविंग? If you are having any doubts, please do ask. Supply and demand video, I could not understand properly. That's totally fine. There are 8 videos. Go through 8 videos again. Formula video, I understand fully. Great, Raghav. Sir, MTSL. स्ट्रीम क्लोज करने से पहले बताऊंगा, बोलो. डेफिनेटली बताऊंगा उसमें. ठीक है. गो थ्रू दैट वंस अगेन राघव. सप्लाई एंड डिमांड का समझ में नहीं आया तो रिसेंटली 1 वीक का सप्लाई एंड डिमांड अलोकेशन स्टार्टिंग पॉइंट्स देखना उतना है. गोल्ड BTC इंडियन सेशंस का जो हम करते हैं ना लाइव स्ट्रीमिंग में, सिर्फ वो देख लेना फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ओके.
I will try to come on time from tomorrow. No worries. आज का ही रिवाइंड करके देख लो स्टार्टिंग से. ओके, आज का रिवाइंड. Now I understood why you said not to trade in Indian markets. थैंक यू सो मच अंजलि. समझ में तो आया क्यों नहीं बोल रहा हूँ. ओके उस्मा, ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग, राइट? योर एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ ट्रेड कहाँ पे होता है? Your major execution point of the trade is looked in perspective of our setup S2B1 and S2B2s, correct? In this scenario, मेरा एक movement plan है. यहाँ पे wick create हुआ, second candle closure, third candle में execution हुई, correct? इस third candle execution में at the first point of action मेरा movement कहाँ पे होगा? SL का. SL Asian session में मेरा यहाँ पे 2 points का gold में होगी, 200 points का BTC में, करेक्ट? सो ये मेरा एसएल रेंज ऑफ एक्शन हो गया, राइट? विद द एसएल रेंज ऑफ एक्शन ऑफ एशियन सेशन, व्हाट विल बी दिस एसएल रेंज इन न्यूयॉर्क? अभी मैंने एशियन सेशन में तो 20 पिप्स की अलोकेट करके चली, बट एट द न्यूयॉर्क सेशन इट शुड ऑलवेज बी 40 पिप्स. 40 pips in the sense 4 points in gold, 400 points in BTC, right? So this is the major SL range. Because इतना बड़ा SL range क्यों रख रहे हो? क्योंकि आप लोग बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि 400 पॉइंट्स वो तो मैं इतना कैप्चर करता ही नहीं हूँ, तो इतना बड़ा एसएल रखो क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे कैप्चर करते हैं 1500 प्लस पॉइंट्स. तो दिस इज टोटली फाइन फॉर अस. एंड इन एशियन सेशन 200 पॉइंट्स. Okay, once you execute that trade in this point of action, the market continues on the continuity, right? Definitely we'll see a break continue movement. In the Asian session, your SL will come to CTC plus 10 pips, which is 1 point. When will you move your CTC plus 1 pip? When the market is running at 50 plus pips, which is 5 points plus. ये मोमेंट जब चल रहा होता है एशियन सेशन में, तब जाके CTC प्लस 1 पॉइंट का आप सिस्टम ट्रेलिंग करोगे. उसके बाद क्या होती है? जैसे कंटिन्यूटी में मूवमेंट जाता है, योर फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन विल बी प्लेसिंग ए एमटीएसएल पॉइंट, राइट? एग्जांपल समझो, यहाँ पे 60 पिप्स की मूवमेंट आई, 6 पॉइंट की मूवमेंट आई मूवमेंट में, राइट? तब क्या होगा? आप एमटीएसएल स्टार्ट करोगे इन माइंड ट्रेलिंग, राइट? वाइल ट्रेलिंग इन द माइंड, सिस्टम ट्रेलिंग में सीटीसी प्लस 1 पॉइंट है, बट दिमाग में आपका एक लाइन ऑफ कंडक्ट होना चाहिए 30 पिप्स. 30 पिप्स के साथ 3 पॉइंट्स के नीचे ग्रीन में क्लोज होता है, तब मैं एग्जिट करूंगा. तब तक मार्केट इसके ऊपर है, मैं बना रहूंगा. हल्का सा विक भी क्रिएट होता है, दैट्स टोटली फाइन. बॉडी क्लोज नहीं होती है, बने रह सकते हो, राइट? कंटिन्यूटी. देन market यहाँ पे 80 pips की movement दी, which is 8 points. Then your system trailing will come directly at 60 pips, and your MTSL will come at 60 pips, and your system trailing will come at 30 pips. ये रूल ऑफ एक्शन को फॉलो करके बने रहना होगा. सेम सिनेरियो अगर मार्केट में न्यूयॉर्क सेशन में क्या होगा?
न्यूयॉर्क सेशन आपका एसएल रेंज ही 40 पिप्स का है, करेक्ट? सो यू हैव टू वेट फॉर ए मूवमेंट ऑफ 80 पिप्स। 80 पिप्स का मूवमेंट होने के बाद एसएल सिस्टम ट्रेलिंग पे आएगी, यहाँ पे सीटीसी प्लस 20 पिप, राइट? 20 पिप एसएल होगा, 20 पिप एसएल इन ग्रीन, which is 2 points, CTC plus 2 points. Then market 80 pips मूव होने के बाद 100 पिप मूव हुई, 100 पिप के साथ कंटिन्यूटी में बिल्ड आउट आई, that's when MTSL will come, right? जैसे MTSL पॉइंट ऑफ एक्शन जनरेट होती है, what is the first plan of action? 20 पिप्स तो यहाँ पे सेव्ड है, यहाँ पे आप 40 पिप्स लेके चलोगे, 1:1 रेशियो, राइट? आपने 40 की रिस्क लिया था, वो 40 की रिस्क कवर अप होना चाहिए। From this point of action till this zone, CTC point of action with 20 pips is 1:1 ratio। उसके बाद जो मूवमेंट इंटायर कैप्चर हम करते हैं वो 1:10 मूवमेंट होती है, राइट? 1:10 मूवमेंट में मेजर एक्शन प्लान आपको क्या फॉलो करके चलना होगा? यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, जब तक MTSL पॉइंट के नीचे क्लोज नहीं होती है आप बने रह सकते हो, राइट? इन दिस सिनेरियो अगर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक लिया, क्लोज नहीं किया, सिर्फ विक क्रिएट करके रिजेक्शन लिया, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन लुक फॉर अ कंटिन्यूटी। अगर इस पॉइंट ऑफ एक्शन में S2B1 या S2B2 क्रिएट होती है, what will we be doing over here? We'll add on the quantity for the next mathematical targets. At that point, your MTSL will come at 120 pips, your system trailing will come at 80 pips. That is the followment of MTSL and TSL in the systems. Okay, please follow this rule. This is very important in the markets. कोई नहीं बोलेगा आपको। ऑलवेज माइंड ट्रेलिंग फर्स्ट होना चाहिए, सिस्टम ट्रेलिंग सेकंड। सर एक बात बताओ, सच सच बताना, झूठ मत बोलना, पूछो तो सही। क्या सच में बड़े इंस्टीट्यूशंस रिटेलर्स का एसएल हंट करते हैं? उतना टाइम नहीं रहता है हमारे पास। बट हमें पता रहता है कि व्हाट इज द मूवमेंट अलोकेशन, नंबर्स उसी पॉइंट ऑफ एक्शन में रहते हैं जहाँ पे वो एग्जीक्यूशन दे, तो उस बेसिस पे नो, वी डोंट वेट फॉर रिटेलर्स टू एंटर इन द ट्रेड। ओके, trade fearlessly, following the right risk to reward, make sure to control on the emotions। जीतने से खुशी मनाना, हारने से दुखी हो जाना is not the quality of the traders, be in the directions of the mathematical precisions। No FOMO trading, no running candle executions, no impatient trade। All the new members, do the back testing for 1.5 years। All the old members, whatever doubts you're having, please do write it in the comment। 1.5 years of back testing होने के बाद 1.5 years of forward relay bar testing। With the forward relay bar testing, 1 month of live analysis। With the live analysis, the next point of interest taking under the circumstances will be of what? Small account execution, following the risk to reward to build the confidence। With building the confidence, compounding the value, following the right risk to reward। एक ही चीज बोलना चाहूंगा, फोमो में ट्रेड मत करो, पेशेंस में बने रहो जब ट्रेड में हो। फोमो कैरी आउट करना भूल जाओ, एंड डायरेक्शंस में हो तो कामली बैठना सीखो टिल द मैथमेटिकल टारगेट्स। दिस इज नितेश साइनिंग ऑफ, मिलते हैं शाम में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।